Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today in this video, in the previous video we have studied about air and water. What are they are natural resources, है ना. हमने उनसे हार्मफुल सब्सटेंस क्या रिलीज़ होते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं हमको, नेचुरल रिसोर्स से हमको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कितनी परसेंट गैसेस जो है वो एयर में प्रेजेंट है, कितनी परसेंट गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. वी हैव सीन दैट. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट learning about land. What is land? So you have already known what is meant by land. Land is seen in form of stones, है ना. लैंड पे हमको क्या दिखते हैं, लैंड मतलब ज़मीन. ज़मीन पे हमको क्या दिखते हैं, वहाँ पे स्टोन्स दिखाई देते हैं, सॉइल दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं. दैट इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर, है ना. लैंड इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर. इट इज़ hilly in some places and flat in others. Okay, all terrestrial animals including man live on land. Obviously terrestrial animals हो गया including man, everything that is surviving on land. Some terrestrial dig burrows in ground for shelter. Some are, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट दे डू नॉट नीड लैंड फॉर देयर ग्रोथ और दे डू नॉट नीड लैंड फॉर देयर सर्वाइवल. हैंस दे डग, है ना, वो हैंस दे डग बिग कैनल्स और बिग सरो फॉर देयर सर्वाइवल. Bureaus, this means that they use land for fulfilling their need. We also use land for farming and building houses and roads, है ना. फार्मिंग जो होती है वो लैंड पे ही होती है, हाउसेस जो है वो भी लैंड पे ही बने हुए. वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड. The minerals, crude oil and natural gas obtained from the earth are very important for us, and these all we get from inside the land, है ना. It means that land is an important resource. तो इसका मतलब क्या होता है कि लैंड हमारे लिए क्या हो गई, ज़रूरी हो गई. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट. Now what you have to do, you have to take a transparent plastic bottle, okay, and you have to put some soil. Okay, you have to put some soil in it, put some stone in it and some dry leaves and water. Okay, now cut off the upper tapering part of the bottle. Cut that upper tapering bottle, that pointed part of the bottle. Put the rest of the materials in the lower part and add water. ठीक है, add water in it. Okay, stir the mixture thoroughly. Stir it, मिक्स कर लो उसको पूरा. ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे एंड आंसर. उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट डे और आप आंसर बताएंगे. क्या देख रहे हैं आप, वॉट डू यू ऑब्जर्व, हाउ डज़ द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ. अब वो जो बॉटल है वो कैसे दिखाई दे रहा है आपको. Do you see layers in it? Yes, obviously you can see there are layers, many layers forming. Layers of big stones, small stones, sand, soil, dry leaves. There will be a layer of particular soil type. Okay, the land on earth also look like this. और ऐसे ही जो अर्थ पे लैंड है वो भी ऐसे ही लेयर्स में दिखाई देंगी आपको. इफ़ अ पाइपलाइन इज़ बीइंग लेड इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व केयरफुली द पिट्स डग फॉर दिस पर्पस. आपके नेबरहुड में अगर पाइपलाइन डाली गई है अंडरग्राउंड तो उसको ऑब्जर्व करना आपने. वहाँ पे आपको लेयर्स दिखाई देंगे लैंड के अंदर. यू विल सी सम लेयर्स अंडर द लैंड सर्फेस like in the 1.8. here there are the layers, है ना. the first layer is of humus, भूसा रहेगा. the second layer is of soil. third layer is of immature soil that is going to prepare after some time. okay, now fourth layer is of layer of soil and small rock. it consists also soil and soil with small rocks. now the last and the most important, that will be very thick soil. okay, and that is known as bedrock. okay, if the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of remains of plants and animals. Obviously there are many grazing animals roaming on the ground. That's why that soil, that particular soil, or that the topmost soil contain what does it contain. It contain decomposition of remains of plants and animal, and what that layer is called, that particular layer is called humus. it is usually found in dense forest. okay, the land below this is full of sand, soil, small stone, worms, insect. and the second type of soil that is present below humus, and that is contain of that soil contains some soil, some rock particles, some insects, some worms. Soil and pieces of bedrock are found below the layer of land. This soil is immature, and the third layer is of immature soils.
फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेज दैन दैट ऑफ रॉक इंक्रीजेज। और जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे वैसे ही बड़े बड़े जो स्टोन्स रहेंगे, रॉक है, उसकी क्वांटिटी वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होंगी। दिस इज़ द लेयर ऑफ बेड रॉक। व्हाट डज इट कॉल, इट इज़ कॉल्ड बेड रॉक। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल are derived from these rocks. That is why soil is different regions and different. Okay, soil in the different regions are different in nature, in proportion. The color and the texture of soil are both determined by the bedrock. The process of soil formation. How does soil form? The soil on the land is formed by natural process. तो सबसे पहले soil formation का जो process है वो natural है, वो man made नहीं है students. The abiotic component of soil are supplied through the weathering of bedrock. bedrock का weathering होगा, उसकी cycle चलेंगी और फिर उसके बाद में abiotic components जो होंगे वो supplied होंगे due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively. और ये cycling किसकी होंगी, इसमें heat की होंगी, cold की होंगी, water की होंगी, sun की होंगी, wind और rain respectively. The bedrock break down. और फिर जब ये cycling होंगी तो इसमें bedrock क्या हो जाएंगे, into pieces. It get break down into pieces. Stone, sand and soil are formed from these pieces. Okay, microbes, worms and insects are found among them. और उसी के अंदर microbes, insects सब दिखाई देंगे आपको. rodents like mice and rats are also found there. rodents मतलब mice और rats भी वहीं दिखेंगे आपको. The roots of tree growing on the land also help weathering of rocks. The process of soil formation is slow and continuous. तो soil formation का जो process है students, how is it? It is slow and continuous. Okay, it takes about 1,000 years for a 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form. मतलब it is very slow in nature that it need 1,000 years for only 2.5 centimeter thick layer of soil to form. Okay, now move on to the further page, that is soil can get destroyed in a short period due to floods, storms and human activities such as mining. मतलब उसको इतना टाइम लग रहा, 1,000 years लग रहे बनने में, बट इट कैन डिस्ट्रॉयड इन अ मिनट, इन अ शॉर्ट पीरियड. किसकी वजह से, फ्लड्स की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे, तो वो माइनिंग करेंगी, है ना. मिनरल्स को निकालने के लिए जो रोड्स होते हैं, जो लैंड होती है उसको डिग करना पड़ता है और उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल. इसकी वजह से सॉइल को बचाना बहुत ज़रूरी है. एंड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ लैंड, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, वी हैव टू प्रिवेंट इट. द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज़ टू इंक्रीज ग्रीन कवर ऑफ द लैंड. तो इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन कवर ऑफ द लैंड, दैट इज़ ग्रोइंग प्लांट, है ना, प्लांटिंग ट्रीज. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लांट ट्रीज, है ना. एरिया erosion of land is reduced if grasses, trees and bushes are grown in it. Obtain specimen of soil. This will be your homework. You have to do it. Okay, now do you know, let us read this. Do you know that purple box, humus is the layer formed on the soil due to the decomposition of dead plants and animal by microbes. Students, what do we mean by humus? Humus is the first layer of the soil, okay, that is present on the surface of the ground and that is formed on soil due to the decomposition of dead plants and animals. Humus supplies nutrients to the soil. What does it supplies? It supplies nutrients to the soil. Humus is also important for aerating the soil and for holding water in the soil. Okay, the proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33% to 50%. Now, what are the constituent of the soil? Classify them as abiotic and abiotic components. You have to classify them. This will be your homework. Okay, now read this orange box. Forest on land got buried underground due to great upheavals that took place on the earth many ages ago. After that, the process of formation of fossil fuels from the remains of living things took place underground. For in many years ago, forest on the land, what does that happen? They got buried underground due to the great upheavals, okay, and that took on the earth many ages ago. After that, the process of formation of fossil fuels from the remains of the living thing took place underground. And that underground, जब वो अंदर चले गए, सारा फॉरेस्ट पूरा धस गया, तो वहीं पर क्या हुआ, लिविंग थिंग्स के जो डेड रिमेन्स थी वहाँ पे फिर फॉसिल फ्यूल्स बनना शुरू हो गए. वी गेट फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन एंड अदर यूजफुल मटेरियल
like tar and wax from the fossil fuel called crude oil. What does the name of that fossil fuel is? Crude oil. And from we get petrol, diesel, kerosene from them. Okay, now living things use land, water and air available on earth, and so does man. Obviously this is the need of everyone in the world, है ना. तो लैंड, वाटर, एयर सबकी ज़रूरत है, तो मैन की भी ज़रूरत है, लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत है, माइक्रोब्स की भी ज़रूरत है. एवरी लिविंग थिंग यूज़ लैंड, वाटर, है ना. हाउएवर द पोर्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली पुट टू यूज़ are very small as compared to the whole earth. Obviously in the whole earth that proportion is very small, and as population is increasing, their demands are increasing, but the land is very limited. So the proportion of that resources are actually put to use very small. ओके, एज़ कम्पेयर टू द होल अर्थ और एज़ कम्पेयर टू द नीड. लाइक लैंड का जो हिस्सा है वो ओनली 29% है, पोर्टेबल वाटर और फ्रेश वाटर का 0.3% है, वाइल ऑक्सीजन जो है वो 21% है. इवन इफ दी स्मॉल प्रपोर्शन द रिसोर्सेज शोन इन द अबाउट टेबल आर सफिशिएंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, बट इंस्टेड इतना प्रपोर्शन होने के बाद लिविंग थिंग्स को मतलब वो सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई हो रहा है, तो फिर थैंक्स टू गॉड बोल सकते हैं अपन कि अपने को कभी इन चीज़ की कमी नहीं पड़ती. ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हीज ग्रीड. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोली पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी नीड्स बढ़ रही है, तो अगर इस चीज़ को अगर प्रपोर्शन में लेना है, कंट्रोल में लेना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर ग्रीड टूवर्ड्स इट, राइट. इन अदर वर्ड ही मस्ट यूज़ दिस रिसोर्सेज जुडिशियसली, मतलब जब ज़रूरत है जब भी आप उसको इस्तेमाल करें, with the awareness that are meant for all living things and not just for mankind. Okay, now this green box institutes at work, है ना, where does it takes place? The main function of this institute to observe the weather and to make weather forecast. weather forecast को देखना. This institute also conduct research related to changes in weather, make forecast about rains and studies. रेन्स के बारे में जो अपने को मालूमात देते हैं कि आज इतनी रेन होगी, 3 दिन तक हैवी बारिश होंगी, 3 दिन तक हैवी रेन होगी, 3 दिन तक नहीं होंगी. ये सब कौन बताया था? इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD. ओके, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1875. ठीक है, एंड दैट इज़ यूज्ड टू स्टडी द वेदर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, तो स्टूडेंट्स, in this way we have completed the whole chapter here, and that the name of that chapter was natural resources. And natural resources are of 3 types, that is land, water and air. Okay, now read this book. What we have learned, हमने क्या पढ़े हम देखेंगे. The elements available in nature which fulfill the basic need of living things are called natural resources. Obviously that elements that are fulfilling the needs of living thing, and that particular elements are known as natural resources. And what are natural resources? Air, water are important natural resources. Soil has both biotic and abiotic constituents. Okay, these are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases, water vapor and dust particles. आपको यहीं पर ही मिल गए. ये constituents of air है. The ozone layer is a protective shell of earth. What is the protective shell of earth? Ozone layer. And natural resources should be used carefully and sparingly. In this way we have completed this chapter, that is chapter 1. Now in the next video I will going to provide you exercise, okay, of this chapter. So I hope you all get my points clearly. Thanks for watching. Allah Hafiz.